First of all, I extend a very warm greetings to each one of you. And we gather here today to discuss the review, to discuss what we did in last 2 days, and tell you about the poll preparedness in West Bengal and in the country in general. West Bengal is the state famous for its celebration and festivities. As you know, there is a popular Bengali saying, "Bara maso, tera parvo." So the election is the 14th parv. जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है वो भी एक पर्व है और वो आपके सामने है. प्लीज ज्वाइन इन दिस पर्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट थ्रू यू all the voters of West Bengal to join in this coming festival of democracy in an extremely friendly environment and in large numbers. The Commission has its priority, very, very clear priority. Free elections, transparently done, violence free, inducement free. This is what is the focus. How do we do that? And what we discussed in last 2 days, that I will brief you all. There is no place for fear, intimidation or violence in elections. We are determined to make the experience of voting for all the citizens, all the voters, very, very festive and devoid of any kind of a fear or inducement. How would we do that? What political parties mentioned to us, I will all brief you about this. तो साथियों, 2 दिन में हमने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत की, सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज से बात की और डीएम्स, एसपीज, आईजीज, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, डीजी सबसे बातचीत की, सबसे रिव्यू किया. The political parties who came to meet us were national parties like AAP, BSP, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनपीपी, और स्टेट पार्टीज में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. तो इन सब पार्टीज ने क्या कहा, व्हाट डिड दे आस्क अस, और उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से क्या उनके सुझाव हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ये भी आपके माध्यम से बताऊंगा. सो फर्स्ट, पार्टीज सेड दैट देयर मस्ट बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड and free, fair and violence-free elections. All the parties mentioned about this. The points they raised was that bureaucracy is not perceived to be neutral. It is compromised and biased. This is what majority of the political parties mentioned. They said lower bureaucracy in particular is not aligned to the free elections and providing level playing field. They say the partial conduct of some of the officers in the recently held elections of other than legislative assembly and parliament must be looked at. There were partisan role of some of the officers and there were strictures against them. ये भी कहा कि जो ट्रांसफर्स पॉलिसी है कमीशन की वो सही से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो. One of the party even raised the issue that false cases are filed and even at times nobody is spared. So generally they said थोड़ा भय का वातावरण है, इसलिए इसको ठीक करने की कमीशन कोशिश करे. They said the violence pre-poll, during the poll and after the poll must be curbed. The international borders should be guarded well so that there is no possibility of any kind of nuisance from that side. उनका ये भी कहना था कि वोटर्स का इंटिमिडेशन डिफरेंट फॉर्म में होता है, खासतौर से 7-8 दिन पहले इलेक्शन के, उसको रोका जाए. बहुत से इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऐसे हैं जो वोटिंग को रोकने की और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं बॉम्ब थ्रो करने की, मोलेस्टेशन की या इंटिमिडेशन की, उनको रोका जाए.